Assalamualaikum everyone, welcome ladies and gentlemen. आज इस्लामाबाद की एक बहुत गर्म शाम है और हम बहुत खुश हैं कि कभी हमने इतनी ज़्यादा जो है अटेंडेंस नहीं देखी इस्लामाबाद में गर्मियों में और रमज़ानों में थोड़ी कमी रही है और माशाल्लाह मेरा ख्याल है आज हमारी जो गेस्ट हैं वो इतनी स्पेशल हैं कि वी हैव क्वाइट अ फुल हाउस हियर टुडे. Special thanks to Said Book and to Atom Camp for organizing this. इससे पहले कि मैं हमारी गेस्ट का तारुफ करूँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब इनको गूगल करते हैं तो मुनीज़ा हाशमी के बारे में ये पता चलता है कि वो फैज़ अहमद फैज़ की बेटी हैं. Right. और दैट्स हर फर्स्ट बायो लाइन, जिसको बायो लाइन कहते हैं. तो आज हम पता करेंगे उनकी एक किताब कॉन्वर्सेशंस विद माई फादर, 40 years on a daughter rights response basically. इस बुक की पब्लिशर इज़ आई बिलीव संगे मील एंड ये इसी साल आई है. और इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज आई थिंक ये एरा है उन ख़वातीन का आगे आने का जो हमेशा अपने शोल्डर के पीछे देखती हैं मर्दों को. और इनकी अम्मी की किताब एलिस फैज़ को शायद लाहौर से जो लोग हैं वो जानते हैं और मेरे लिए वो फ्रैंकली वो शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स. उन्होंने दो बहुत अहम किताबें लिखी हैं. एक उन्होंने डियर हार्ट लिखी थी एंड एक उन्होंने ओवर माई शोल्डर लिखी थी. यहाँ पे भी सही बुक में अवेलेबल है. सो गोज़ विदाउट सेइंग दैट मुनीज़ा हाशमी कम्स फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन लिटरेरी फैमिली चिल्ड्रन. प्रोडिजीज होती हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है और उनकी बायोस भी हाईजैक की जाती हैं. चाहे कुछ भी करें, दे आर जस्ट द डॉटर ऑफ फैज़ अहमद फैज़, आवर सॉर्ट ऑफ पोएट, आवर नेशनल पोएट, आवर पर्सन हु वी टर्न टू ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ जब डेमोक्रेसी के पाँव जो है वो घबराते हैं या जो है कदम जो है वो वीक हो जाते हैं, डगमगाते हैं, तो उस वक्त हम फैज़ अहमद फैज़ का नाम लेते हैं. सो मुनीज़ा हाशमी ने ये किताब लिख के हमें ये रिमाइंड कराया है कि मर्दों के पीछे औरतें होती हैं और कभी कभी मर्दों के आगे भी औरतें होती हैं. क्योंकि उनके जाने के बाद भी मुनीज़ा हाशमी ने फैज़ अहमद फैज़ के साथ कॉन्वर्सेशन जारी रखी है. मुनीज़ा हाशमी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन टुडे. मुनीज़ा हाशमी के बारे में ये भी तारुफ कराती चलूँ कि शी हैज़ अ स्टेलर करियर इन प्रोडक्शन एंड इन टेलीविज़न. बल्कि हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न के जो 4 चांद का ज़माने थे वो इन्होंने ही लगाए थे. And she's done a wonderful thing with the Fez Ahmed Faiz Festival, among other things. But today we're here to discuss her book, so thank you again for being part of this. Thank you for inviting me. I mean, I'm quite taken aback that I just wrote this book. Can I start? Of course, yeah. My father wrote me some letters. For the people who are going to hopefully buy the book, and don't you dare leave without buying the book. So he wrote me letters because he was an absentee father. I've called him that all my life and I don't regret it. I hold it against him, but that was not his fault. Partly, of course, he was in jail, which had nothing to do with it, was not his fault. And partly because, of course, he was traveling, but mostly because he was in exile. So when he wrote me letters. And those letters stayed with me, obviously. And then I don't know why, I have to go back and think a lot to find out why I wanted to get those letters out. And then there are some people in my life who are my mentors, people who I adore, who I love. Dr. Arfa is one of them and several others. और मैंने उनसे पूछा जाके, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ये ख़त हैं, ये मेरे ख़त हैं. तो कहने लगी हाँ हैं तो आपके, लेकिन ये अब आप कभी तमीज़ से कहा उन्होंने, मगर कह दिया कि आपके भी जाने का टाइम हो रहा है, ध्यान करें, तो ये अब आप छोड़ दें क्योंकि आगे जो आ रहे हैं लोग वो कैसे जानेंगे. एंड शी हैड अ पॉइंट, शी सेड एंड अ कपल ऑफ अदर वेरी लवली फ्रेंड्स which who are mentioned in the book, and she said, you know, there are only 2 people in this world who knew him as a father, myself and my sister. तो वो तो किसी ने रोल देखा ही नहीं उनका. तो ठीक है, पोएट, फिलोसोफर, फलाना, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह वो ठीक है. तो कहने लगी ये जब तक वो ख़त पढ़ेंगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो बाप कैसे थे या वो क्या सोचते थे या क्या लिखते थे. तो ये आप पे मॉरल ड्यूटी, उन्होंने मुझे वो वाला डंडा मारा. दिस इज़ योर मॉरल ड्यूटी, दिस इज़ योर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेक्स्ट जनरेशन.
to print these letters. So which takes me to the next question कि अगर आपने ये letters in response लिखे हैं to him, right? हाँ अच्छा तो अब ये ये आपने उस टाइम पे नहीं जवाब अब ये दिया? अब ये कि ज़रूर दिए होंगे मगर my father being my father lost them I suppose या कुछ because of his traveling and so I don't know what I wrote and I am probably ashamed of what I wrote because I must have been complaining half the time. But then I decided that, and this is something that I mentioned also, Adil Hashmi अगर आप जानते हो उन्हें dictates my life now that he's almost 50 years old. वो कहने लगे यार ये बड़ा बोरिंग है खत लिख के तो छाप के तो फारिग हो जाएंगी तो मैंने कहा फिर क्या करूँ कहता think of something different. Write to him now after he's passed on. Share with him your life that he never shared with you because you're complaining all the time that he was never there. So this is why, and this caption is also given by a very dear friend, 40 years on, a daughter responds. Azam Jameel gave me this caption. He says, write this. So it's a very interesting mixture of a man, of a father who wrote letters to me 40 years ago. Obviously, he's been dead 37. And then I'm responding now with my life. What have I done? Where did I go? Who did I visit? About the response, आपने बात की कि complain करती थी आप उस वक्त, I'm right? sure because I think the letter you can see. Yeah, and also इसमें भी एक खत है जिसके अंदर आपने sort of complain किया है कि आपके पास time सिर्फ उस वक्त होता था जब मैं आपसे time छीनती थी या खींचती थी. I think the English word you've used is stolen moments. कि मुझे अपने बाप से ही चुराने पड़ते थे लम्हे. Tell us about those. Because you see, either first of all, when he was present, then there were people with him. कभी कोई activists आ गए हैं, कभी कोई journalists आ गए हैं, कभी, and then of course, if I may, he was an editor, and obviously उस ज़माने computer नहीं था, so he would go to the office about 6 or 7 in the evening, and वो सारी copywriting वो सारा वो तो हाथ से लिखा जाता था ना अखबार Pakistan Times, and he would come back in the morning when I would be asleep. Yeah. And then I would get up and go to school. So there was sometimes not connection for days. Yeah. So there were stolen moments. So that is when I say absentee. That if he was home, then he was working or with people, or there were lots of. Even at that time, Pakistan had a lot of problems, and he was trying to solve them. He never did. Otherwise, it would have been better than what we are now. What's your favorite stolen moment of his? Then I grew up and I went to college and I went to Connect College and it's accounted for in that and I went to the hostel. अगर आपने अपनी ज़िंदगी में हॉस्टल में नहीं ज़िंदगी गुजारी तो आपने कुछ नहीं गुजारा. The freedom of being in a hostel. And he would visit Lahore and he would take me out for a meal. And ice cream sometimes, you said. And ice cream. And those were stolen moments. वो सिर्फ सुनते रहते थे मैं सिर्फ बोलती रहती थी खाना ख़राब है बिजली नहीं है गर्मी बहुत है मार्क्स नहीं आए फलाना द यूजुअल स्टोरी और वो सुनते रहते थे and I used to say are you listening? Yeah, I'm listening. ऐसे बोलना ऐसे carry on. Stolen moments से याद आया stolen का जो concept है जिन मेरा ख्याल है बेटियों के बाप absent होते हैं या नहीं होते उनके पास एक जनरल सेंस ऑफ डिप्रेविटी होती है. एक होता है कि आपकी बाप की चीज़ नहीं है. मनी आई वांट टू टच बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के कमिंग फ्रॉम अ फैमिली दैट हैज़ बोथ सोशल वेल्थ एक हम कहते हैं ना प्रिविलेज होता है डिफरेंट किस्म का प्रिविलेज होता है एंड सोशल एक्विटी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड प्रेस्टीज हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो आप हमारी सोसाइटी शायद ये समझती है कि किसी के पास अगर फेम है और माइंड यू बाय द वे एक टाइम पे वो फेम बहुत प्रॉब्लमेटिक फेम था. आपको स्कूल में बुली किया जाता था कि आप कम्युनिस्ट की बेटी हैं राइट गद्दार राइट. तो उस लेगेसी के बावजूद अभी थोड़ा सा सेंटिमेंट ये है कि यू कम फ्रॉम मनी एंड द रीज़न आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज़ बिकॉज यू नेवर इन योर लाइफ आस्क्ड एनीवन फॉर मनी एक्सेप्ट योर फादर. I have 2 grown sons. I'm probably going to go on record and they're going to hate me. They're both like मैं देती हूँ मतलब मैं देती हूँ मैं ले नहीं सकती मुझे एक मसला है. But the only person I took money from was my dad. अच्छा that was the time Aisha when I didn't have any money. I was in college.
And so खाना खराब था, कपड़े नहीं थे, something like that. And the letter there says so. Because there's this thing about my mother, and he said कि अपनी अम्मी को ना बताना, हम तुम्हारे लिए पैसे भेज रहे हैं, और चूंकि देर हो गई है इसलिए सूद बढ़ा दिया है. I probably asked for 200 in my return, 300 or whatever. Now we're talking like what, 70, 60 years ago. Whatever. So yes, he was the only person that I could ask from. It was not just money. I remember it was my 10th wedding anniversary. I don't know why I'm thinking of these things. It was my 10th wedding anniversary. This must have been 1967, 77. So he must have gone after Ziaur came in. He was in Russia. So I said, I'm having a celebration. You're not going to be here. Make sure you get. So he brought me the most beautiful topaz earrings from Moscow, which of course I lost by break. But I remember that he said, "Ye tumhara tohfa." And I just couldn't believe it, that he actually remembered. So he was the only person. He was an absent father. Maybe वो शायद थे नहीं आपकी ज़िंदगी में हमेशा, और maybe attention wise भी वो शायद इतने present नहीं थे mentally. कई लोग कहते हैं जी होते थे मगर नहीं होते थे. वो उसमें एक लेटर ये भी है जिसमें वो लिखते थे कि जब तुम अपना पीटीवी के बारे में इतनी शिकायतें करती हो, जो कि मैं करती थी वगैरह वगैरह, तो तुम ये हमारी वो कर लिया करो, तुम स्विच ऑफ, आप अगर तुम स्विच ऑफ कर लिया करो. और स्विच ऑफ से क्या मतलब था उनका? This is what people used to say, that he used to be there but he was not. Tune out. So tune out, yeah. So that and this is a wonderful way of spending a very boring evening at shadis and wherever the hell you are. If you just switch off and you keep smiling. जिस तरह दिल कहता है मसनूई से मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते. So and there are so many people who told me about it कि फैज साहब होते थे, सिगरेट पी रहे होते थे लेकिन कुछ और सोच रहे होते थे. So मेरा initially point आपके साथ यही था कि जब आपने ये कहा कि he was an absent father, लेकिन I think languages of love होता है, जैसे आपने कहा आप देती हैं, that's your language of love. I think his language of love perhaps was to give you enough दावा कि मांग लो जो मांगना है, because after that you couldn't ever ask anyone for anything. No, I've never have, and I hope to the Lord that I never will. But with him it was different. Why was it different? I don't know. Can you read me this letter of his to you? उर्दू का? English वाला. इंग्लिश का पढ़ो, लिखा तो उर्दू में है. हाँ पढ़े, उर्दू में पढ़िए. प्यारी मीज़ू, तुम्हारा ख़त मिला, ये सुनकर खुशी हुई कि तुम अपनी मुलाजमत से मुतमईन हो और इसके अलावा कुछ और काम भी संभाल रखा है. सिर्फ इतना है कि अगर काम अपनी पसंद का हो और उसमें अपनी सख्त और बिसात से ज़्यादा मेहनत दरकार ना हो तो ठीक है, वरना महज पैसे की खातिर अपने आप को हल्कान करना दानिशमंदी की बात नहीं. तुम्हारे मकान की तामीर शुरू हो गई है, मुबारक हो. हमारे आने तक तो ये ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसकी कुछ सूरत तो निकल ही आएगी. जब तक तुम्हारा 1 1.5 लाख, ये बात हो रही है उस वक्त की, करोड़ की नहीं हो रही, जब तक तुम्हारा 1 1.5 लाख खर्च होगा तब मज़ीद पैसे भी कहीं से आ जाएंगे. अभी इसके बारे में फ़िक्र मत करो. तुमने अपनी अम्मी के बारे में लिखा है, बात सिर्फ इतनी है कि आजकल उन्हें तन्हाई और मसरूफियत के बाद कुछ दिलजोई की ज़रूरत रहती है. जब भी तुम लोगों को कुछ वक्त मिले उनसे मिलाया करो. जब हम आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा. Can you read all of it? I think that much is good because I want to bring in the point about money, क्योंकि आपकी अम्मी ने जो किताब लिखी है एलिस फैज़ ने, Dear Heart, letters to and from Fez during the time that he was in jail, which is 1951 to 1955. Yeah. Context ये है पैसों का कि उस वक्त 1 लाख was a lot of money, but look at this context. Alice has written this letter to Fez in 1951, December 19th. I'm not in a happy mood as these days near to Christmas and we find ourselves alone. Not that any one of us is a good Christian, but there are many sentiments attached and above all, one needs one's nearest and dearest near one as the season and the year goes. I hear there are to be 14 days holidays in your court. How really dreadful. More precious days thrown away, and for all of us 2 more weeks of prolonged separation and waste of precious money, both public and private. My mother sent us £10 to enjoy the season's fare.
How very good of us. Shall I take the girls out and maybe get them something to eat? सो आई थिंक एलिस फैज़ ने जो वो मुश्किल के टाइम काटे हैं लाहौर की गर्मी में, साइकिल करते वक्त पाकिस्तान टाइम्स से वापस घर, बच्चों का ख्याल, और वो यू नो काउंटिंग द pennies she sort of raised all of you. Then why is it that there is this concept that your family is larger than life? मेरे ख्याल में जैसे कहते हैं दिल बड़ा होना चाहिए, आई गेस. Now that there is also another book, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे, it's called Love and Revolution. It's the only biography of Fez, written by my son, Dr. Ali Hashmi. One of the only and you know I read and that. easy to read. Like एक चीज़ जो मेरा ख्याल है आपके सारे फैमिली में है, वो प्रोज बहुत अच्छा और सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है. फैज़ की भी जो है शायरी जो है वो कॉमन तो ये लिखी किताब तो कुछ 10 साल पहले थी, उसमें 7-8 साल पहले. मैंने अपने वक्त में बहरहाल पिछले साल on my long visit to Chicago पढ़ी. And you know, after reading that book, and I would like to share this with you people, you also, Aisha, we haven't spoken, I realized what a tough life that man had. The ups and the downs, and the more downs than the ups and so on and so forth, including money. और नौकरी तो उन्होंने कभी ऐसा कह दें, लेकिन नौकरी टिक के नहीं की, कुछ टिकने दिया नहीं. आर्मी में भी थे. हाँ, आर्मी में भी रहे और टिक के, तो वो ऐसा जैसे कहते हैं ना पैसे की रेल पे या कुछ, वो नहीं होती थी. हमारे घर में हमने लंडे के कपड़े पहने हुए हैं और हमें उसकी कोई वो नहीं है. और अदील हाशमी अगर आप जानते हैं, बड़ा जोकर, जब हम गरीब थे, टॉक्स लाइक दैट, यू नो सर, व्हेन वी वर पुअर, शर्म तो नहीं आती. तो अब भी कुछ वही हाल अब फिर होने को है, जो कि मैं देख रही हूँ. मैं बात कर रही थी इनसे. आपने लंडो के कपड़ों की बात की, मुझे लग रहा था आप वैसे कह रही है, बट ट्रूली मेयो हॉस्पिटल के पास जो लंडा लगता था, वहां से कपड़े लेते थे. Exactly there. And you know, when I used to say कि what's for dinner, and I used to say shut up, sit down and eat. And then अगर कुछ पक गया जो पसंद नहीं है, तो we were always talking about the starving children of Africa. And you say, what the hell does it matter to me if children are starving in Africa? But this is what she would bring up. And now when I talk to the children, you've left your food. Oh, for God. Adil will say, oh, for God's sake, not that story again. I said, I don't have to go to Africa. I can go back just to the Punjab. So we were never allowed that comfort. I mean, आजकल अगर कभी अदील आता है, कहता है बिजली नहीं है, बिजली चली गई है, and he say, you got that look on your face. I said, ऐसे तो बाहर समझे सा अपना वो पक्का नहीं होता. 10 साल पहले मैंने मिसेस हाशमी का जबरदस्ती आपका फोन चेंज कराया था, because you were on this like Nokia 3310 level. पंखा भी नहीं होता था, छिड़काव डालते थे, मच्छरदानी होती थी और बिस्तर के ऊपर पानी डालते थे ताकि थोड़ा सा पानी ठंडा. So I mean, you know, we've grown up with that. So but there's that luxury of you know, brushing shoulders with 3 Nobel Prize winners, you know, calling the shots, creating influence in policy. So वहाँ से वो वाली I think ताकत और influence आती है. It jars people perhaps, and maybe they make that impression. आयशा, ये कमाल की, अभी मैं आपसे मुझसे इससे तो बात ही नहीं हुई भी, लेकिन मैं अभी 2 हफ्ते पहले ज़ियारतों से आई हूँ. अब आप पूछेंगे क्यों, मैं बता नहीं सकती क्यों. मेरे दिल में कई सालों से ये एक कॉलिंग थी कि मुझे हज़रत अली के पास जाना है. मुझे I just am in love with that man. और ये जो मैं अक्सा गई हूँ, मैंने हज किया है, मैंने उम्रे किए हैं, जो मुझे उन ज़ियारतों में जाके पता लगा है wealth का, what was sacrifice. No, but that's real wealth, right? I'm talking about spiritual wealth. The sacrifice that you have to give to find yourself. तो मेरे ख्याल में ये मेरे ज़िंदगी में शायद मुझे एक सेटिस्फेक्शन है. मुझे पैसे से नहीं मिलती है, मुझे ऐसे काम से मिलती है. आप जब US गई थी पढ़ने के लिए, can I just say that, you know, you are your father's daughter, when the first question you asked, I think पुराने जो George Bush थे, George W. the older said, why Bush. isn't there a woman in the White House? But that was not where you stopped. You said our country has a woman prime minister, and you guys are behind. बड़ी तकलीफ की थी. They still don't, by the way. Yeah, बाद में फिर जिससे खाना हो गया, मैंने कहा you ask a tough question, lady. I said, what's tough about How was that? that experience? आपका US जाना कैसे था?
You know, I keep wondering about Ali ki, then my son went and was there for 15 years, and of course, as Adil would say, गुजरने जाती तो पहले अमेरिका होती जल्दी, because ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो रहे थे, I wanted to, so लेकिन the first time I went, I mean, I बत्ती नीचे करो तो ऑफ हो जाती, उत्ते करो तो ऑन हो जाती, सारा कुछ पुट्ठा सी होता, सड़क है, सड़क वो कब्बे आते सज्जे आते, I got mad. But the point was, I was actually taken on a scholarship. University of Hawaii. And my dear friend, who is now long gone, told me that you were a decoration piece. They wanted to show that we brought a leftist's daughter as a scholarship holder because we believe in democracy and everything equal. And I was actually a showpiece. And my father had been there as well in Hawaii. So I think they did look after me quite well. And of course, I got my degree and all that. But America was an eye opener for me. I've been there, done it. Enough is enough. I've been there about 50 times, and I think that's more than enough. Especially now. आपके वालिद जो थे वो हमेशा dictatorships के खिलाफ रहे. But can I also say that your time in PTV, almost 40 years, I would say 35 के करीब, where you really revolutionized the place, and you were also the highest ranking female leadership member of the Pakistan television. Still am. Nobody knows. Nobody's broken the record, which is a lot to say क्योंकि हमारे काफ़ी talented खवातीन हैं, क्यों नहीं आगे आने देते. But how आपने भी थोड़ी बहुत टक्कर ली है ज़िया से. Oh God, yeah. Please tell us about that. वो टक्कर इतनी वो लेते थे ज़्यादातर, मैं तो वैसे नहीं तो आदत है टक्कर लेने की, लेकिन मेरी परसों हुई है. I live on the same road as the Prime Minister now, and the Chief Minister now. And पुलिस वाला परसों आया, मैडम ये किसका है रिक्शा? मैंने कहा ये मेरी ड्राइवर का, इसको हटाएं. मैंने कहा बात सुनो, मैं यहाँ 50 साल से रह रही हूँ, इसको आए 1 महीना हुआ है, खबरदार जो मेरी तरफ आए. अच्छा तो टक्कर लेने की मेरी वैसी आदत है. So several times they tried to give me programs that I was not capable of, or I didn't want to do. It's harassment now. It's harassment. Definitely right? Harassment. And but you fought back? Yeah, I did. There was a general at that time. Name is now long gone, but doesn't really matter. Don't want to take his name. Doesn't matter. Who was in charge of that? और आप फैज़ की बेटी हैं. तो मैंने कहा कि बाप तो नहीं बदल सकती है, और आप जो मर्जी कर ले मेरे साथ. तो उसके बाद प्रमोशनें रोकी, प्रोग्राम गलत दिए. वो अगर आपको याद होगा या नहीं, आपको क्या याद होगा, हमारे दरवाज़ों की खिड़कियों में उन्होंने सुराख करके तमाशीशे लगा दिए कि जी हम उसमें से, तो मैंने उस पर कागज़ लगा दिया. तो एवरी डे इट वाज अ बैटल. कागज़ उतरना सी, कागज़ लगना सी. सेंसरशिप की बात कर रही है, बेसिकली सर्वेलेंस, सेंसरशिप, एवरीथिंग कि जी क्या हो रहा है अंदर. मैंने कहा जी क्या मतलब आपका? मैंने कहा लेडीज़ का कमरा है इसमें. नहीं हम तो ये लगाएंगे. तो ये कांस्टेंट बैटल चलती रहती थी. और ज़ुबान के ऊपर फिर एक फैज़ का शेर है जो आप पता होगा, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. तो मैंने एक प्रोग्राम किया जिसके आखिर में मैंने ये शेर पढ़वा दिया. आपको पता है ये 47 में उन्होंने कहा था और इसका ये मतलब था फलाना. मैंने कहा जी मैंने तो लिखा नहीं था, लिखा उन्होंने था. एंड आफ्टर दैट ही वाज बैंड एंड आई वाज टोल्ड दैट आई वाज नॉट टू यूज हिज पोएट्री. आपने तो ये कुछ आदत सी पड़ गई यार. आपने जो पीटीवी में प्रोग्राम किया था, जो टीना सानी ने गाया था, एक तुम जो चाहो तो ये सब चल रहा है मेरी YouTube चैनल पे. तो उसके जो इंटरव्यूज थे, शी इज पब्लिश्ड दिस इन द बुक Who Am I, which I had the pleasure of actually translating all the wonderful interviews. और इसमें पाकिस्तान की trail blazing ख़वातीन है. So anybody who has reached any feat, मुझे याद है कि आपने एक खातून का और इंटरव्यू किया था जो पाकिस्तान की फर्स्ट पायलट थी, और वो fully उन्होंने नकाब पहना हुआ था. And it was quite something when I transcribed those interviews. और पाकिस्तान की तारीख में औरतों के ऊपर जब हम बात करते हैं, या न्यू वेव फेमिनिज्म जो हमारी बात होती है, या मी टू के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, आई थिंक वी कम्प्लीटली मिस आउट ऑन योर जनरेशन्स वुमेन बिकॉज दे आर अनसीन, एक तरह से इनविजिबल होती हैं. तो आपने जब ये किताब लिखी है, कन्वर्सेशंस विद माई फादर, you've written in the introduction that you had sort of always been behind the camera, behind the scenes, orchestrating the Fez Festival, creating the book launches. What has changed with
time now? Shock. I don't know. ऐसे से पतशगड़े लोग आ जाते हैं ना, मैं भी आ जाऊँगा. Actually, I was always behind the camera. I would suggest for anybody who's interested, it's my YouTube channel is called Moneeza Hashmi के साथ. आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ ये सारे इंटरव्यूज वीकली आ रहे हैं. 50 के करीब आ चुके हैं, 150 भी मेरे पास आ रहे हैं. एवरी फ्राइडे आई अपलोड them. तो वो उस वक्त आई यूज्ड टू बी बिहाइंड द कैमरा. And then came a time when I actually met people who said कि मैडम आपका चेहरा ये वो. So then I started. आपका चेहरा कभी था ही नहीं, so सिर्फ शोल्डर नजर आता था. So then I decided कि चलो इतना बुरा भी नहीं है. So then later on I started showing my. No reason. Even then you'll see that the camera is more on the person who's being interviewed. मेरा सवाल होगा, उसके बाद नहीं होगा. I think it's vanity. Actually, I was coming to something else. I was thinking that it is the time for women at all ages Yes. to reclaim their story. Yeah. I feel कि काफ़ी दफ़ा Madonna ने कहा था एक one of her Oscar interviews or something. She said the most important thing I've done is not sung all of these albums. I've refused to leave the stage. I've refused to be irrelevant. क्योंकि एक certain age के बाद एक औरत बिल्कुल irrelevant सी हो जाती है कि दादी हो गई, अब आप ख़त्म करें, जो भी कहना है कह लिया. But I think it's time कि this is the age in which you actually tell the stories. And conversations with my father में आपने कुछ बहुत bold बातें की हैं, right? And in some of them I feel कि फैज़ अहमद फैज़ को एक दफ़ा और sort of like एक relationship जिसको हम कहते हैं personal is political. आपने कहा ठीक है, हमारे बहुत बड़े लोग होते हैं जो बहुत बड़े काम करते हैं, लेकिन द पॉलिटिक्स ऑफ द हाउस, जो बेटी का दिल टूटता है जब बाप जेल जा रहा होता है, उसकी भी अपनी पॉलिटिक्स और अहमियत है. हाँ, you don't forget we're talking now in the 50s. तो उस वक्त तो वैसे ही ये वाला हाल नहीं था कि मिसिंग पीपल एंड ऑल ऑफ दैट, इतना ज़्यादा. बहुत ही कम लोग जेल जाते थे, और जेल जाना बहुत ही बड़ा गुनाह होता था कि जेल तो and it was you were supposed to be really something, and considering the fact that he was called a traitor and so on and so forth. And then later on, and up till the Zia years, Right. and after the Zia years, the whole thing changed. I mean, even my children, both my boys, could not say it out loud in school that they were the grandchildren of Fez. I mean, they were quiet. And in fact, दहरिया है, गद्दार है, इस किस्म की बातें उन्होंने सुनी हुई हैं. अब तो खैर ऑफ कोर्स दे हैव देमसेल्व्स फादर्स एंड सो. तो अब तो वो अमेरिका से आए हैं जो मेरे पोते पोते, दादी नाना wrote a book. I said, Peter, who tera? Yes, he did. I said, why? When my teacher was saying that. He wrote a book. तो अब तो ये हाल हो गया कि मतलब ये तो खैर नहीं, इज अ वेरी नाइस पर्सन, डॉक्टर अली बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी है. लेकिन इनसे पहले जो कुछ थे, वो भी जब फैज़ की सेंटिनियल हुई तो हर साल आपको बुलाते हैं ऐसे आप हर साल. तो व्हेन वी वर टोल्ड कि फैज़ का कोई शेर बता दें प्रेसिडेंट को, तो मैं कि क्यों बोल रहा है भाई, उसको अगर आता नहीं वगैरह वगैरह, तो भी गलत पढ़ा उसने, डजंट रियली मैटर. सो इज नाउ वेरी मच इन टॉक. सो द पॉइंट इज कि नाउ यू हैव, I mean, Fez is back in fashion again. It's like fashionable. लेकिन everywhere you go, it's. अब तो वो मतलब हम देखेंगे तो become a second national anthem. और वो कोक स्टूडियो ने भी ले लिया. वो कोक ने तो ले लिया, तो हम देखें वो तो क्या था, वो जो था सीजे का जो सारा था, वो तो उस वक्त तो सारी सड़कों पे गाया जा रहा था, पढ़ा जा रहा. और अब मुझे जिस बात की तकलीफ नहीं हुई, खुशी हुई एक्चुअली इन अ मैनर स्पीकिंग. Just recently, a week ago, 2 weeks ago, the government of India has removed Fez's verses from the curriculum. Apparently it was included in class 10. कुछ होगा, but they have removed it. और मुझे तकलीफ थोड़ी सी हुई, फिर मुझे खुशी इस बात की, मैं क्या डर गया, कुछ भी डर गया. तो उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने बहुत बड़ा एक लिखा ये वो. But that is because it was becoming a movement after Kashmir. जो कश्मीर के हालात थे उसके ऊपर कश्मीर फाइल्स and so on so on. So it was becoming a movement. So, but the point is that then so many people just said that they can do what they want. I mean, Faiz will never die.
बल्कि मेरे बच्चे कह रहे हैं छड़ दो यार, छड़ दे अपने प्यो का पीछा। मैं कहा मैं तो छड़ दिया, वो नहीं छड़ता। In the sense that he's with me everywhere I go. You mentioned God rest his soul. you mentioned telling Fez about all the important things that he would want to know if he was alive today, and you really took a lot of time on Malala's chapter. Yes. Yeah, Malala. You know, and if you can you read this part of the book, this paragraph right here? You have your reading glasses, yeah? Yeah, of course. I've just trying to. This is okay. Yeah, that chapter. This is in Japan. I was given an award by the then Crown Prince, who's now the king. And by the way, newspaper story ye thi, Lenin Prize's winner's daughter gets a prize. We stood silent. This is the Crown Prince's coming. We stood silent and slightly nervous as he moved slowly down the large circle. The conversation going on between him and each guest was barely beyond a whisper, because एक तो ऐसे बैठा गया ऊपर से उनको आदत भी आपको पता है जापानियों को ऐसे बोलते। The Japanese, as we know, extremely particular about following instructions to the letter and get very agitated if any rule is broken or tampered with. So when he walked up to me and I was introduced as a Pakistani delegate, he sort of looked mildly interested. Malala had won the Nobel Prize just 2 days before. I just elaborated my habit of my... So I said, I'm from the country of Malala, Your Royal Highness. Now that got his attention. And he started speaking about girls' education and how important it was for girls to be given a place in all spheres of life and in government. I kept nodding away because when he's speaking, you can't speak. And then until I saw his aide behind him looking horrified at the amount of time this conversation was taking. It was throwing off the entire schedule. But Japanese being Japanese, and that too in the presence of royalty, I felt really sorry for the guy who was probably thinking as to how he was going to make up the aid for those extra 3 minutes that the conversation had taken. But he actually, he stood there and sort of, I don't know what he said, I can't remember, but the fact that he stood with me. So, I mean, there are moments like this that I thought that I needed to share with my dad. Because nobody actually, I'm shared it with nobody except you. When you bring unless you read the book. When you bring up Malala, I think a lot of people don't know this about you, but you've also been a great development advocate. बहुत ज़्यादा development पे काम किया है. गोटकी के बड़े चक्कर लगाए आपने और हम लोगों ने. और I think those 7 years that I was in development, Mrs. Hashmi was the person who would round the clock be caring about adolescent girls, because she believes कि सबसे ज़्यादा सोसाइटी में जो कम दर्जा मिलता है लड़कियों को वो टीनेज गर्ल्स को मिलता है, कि उनकी आवाज़ बहुत ही दबाई जाती है कि ऑलमोस्ट एज इफ वो है ही नहीं. What are some of the reasons you care so much about adolescent girls? क्या वो period इतना important क्यों है और आपकी life में ये important था? Oh yes, that was the time when he was not there. I was growing up, he was not there, and I was obviously... And as we know, girls go through, everybody goes through, even boys, hormonal changes and so on and so forth. And girls, unfortunately, are not allowed to speak about it, talk about it, discuss it, and are just supposed to walk into it and just bear with it. So I think, and then when this project came along, this is USAID project, when it came along and I started interacting with girls across Pakistan, I realized how the same problems, no matter the language, no matter the province, no matter the social status, are exactly the same for every girl. And of course, we are unfortunately marrying off our girls at that age. They're becoming mothers at the age of 13 or 14. So for me, those are years when you enjoy life. Those are years when you're having fun. Those are years when you're discovering your body as well as other places. And yet you are being sort of heaped with so much of responsibility. And by responsibility, so a lot of girls actually pregnant before they're even 19. So for me, that was very important. And unfortunately, with due apologies to all the young men present and the old, being taken advantage of without actually knowing what they're getting into. A lot of the stories that we hear are that. It's innocence. It is innocence that leads them to perhaps paths that they should have been warned about, but they're not. Because the mothers will not talk about it. Or protected by the state. Yeah, yes, and the mothers won't talk about it.
It's taboo. So because of that, the girl doesn't know. और ये मैंने एक बल्कि मुझे अब याद आ रहा है, ऐसे ही याद आ गया, just 2 more minutes. When I was doing Khawateen Time, which was something that I did in television, I did a play which really rang so true. There's this young girl and a widow mother, and this family young man comes, family sort of कोई कि जी मुझे भी अपने घर में रख लें क्योंकि मैं ज़रा कहीं से काम करता हूँ तो आप तो वो टिपिकल स्टोरी जो होती है ना, ये इमरान भाई है, तो इमरान भाई नहीं है, इमरान भाई तो इमरान भाई है जो भाई है, तो हम जो हर एक को चाचा मामा बना लेते हैं, भाई बना लेते हैं, उस बच्ची को नहीं पता चलता. So he obviously has some designs on her. She won't tell the mother. She's afraid, and then the story unfolds, and then she finally does, and then it's discovered. तुमने आपने तो कहा था ये भाई है मेरा. But then she has to explain कि बेटा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं. So I remember it was questioned in the assembly at that time. Is And I had to. ये आपने क्या ये क्या And then they call it fahashi without Yes. realizing that it is actually a social Yeah, issue. exactly. So I Common actually had to social explain. I wrote an explanation. Sheikh Rashid was हमारे minister थे. मैं मनाज़ा आके लिख देता. So I had to write the paragraph saying that this was, we were trying to expose the fact that we are misguiding our girls. ये चाचा है, ये यूनुस चाचा है, ये फलाना चाचा है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तो बच्ची तो innocent है. So that kind of thing. तो उसकी वजह से I felt the girls are really being actually misguided. A lot of them. फैज साहब की पोइट्री और कॉन्टेक्स्ट में जब भी वो आपको लिखते हैं, there's a certain amount of femininity in his content. और उनकी वो जो जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, उसकी पोइट्री में माओ के बारे में उन्होंने खास एक सेंसिटिविटी रखी है. Do you think he got that from you, or do you think he got that from his mom, or do you think he got that from his wife? Like the last chapter of this book, if you buy it and you get it, is They don't have money, buy it. questions I never asked, answers you never gave. So that is probably a question that I would, so many questions. I never got round to asking. So that is a question I can't answer. His mother, the photograph is there, was totally illiterate. इतनी सी थी, बेबी जी कहते थे उनको, totally illiterate, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ सकती थी. और फैज से इश्क था उनको. He was one of four brothers, one died early, so 3 brothers. He was in the middle. As they say, the middle child is always the one who suffers. और वो ये कहते थे, मेरे ख्याल में लिखा कि फैज बस बैठा ही रहता सी, कभी कुछ नहीं सी मांगता, दूध पिया दे तो दे देते थे, वरना बोलना नहीं सी. और उनके एक मामू थे जो मेरे बड़े फेवरेट थे, वो भी ये कहते थे कि फैज को एक काम आता था, कहानियाँ बड़ी सुनाते थे. वो एक बरगद का दरख्त था, उन्होंने मुझे बताया भी, मैं जाके देख के भी आई थी गाँव में. कहते उसके नीचे ले जाता था, हमें कहानियाँ बड़ी सुनाता सी साथ. So maybe even at that time he was creative. So my father, I don't think my grandmother, and I would see them for a long time, they would sit across, cigarette पिए. अच्छा फिर मैं चलना. अच्छा मतलब घंटा बैठते थे, कोई बात नहीं होती. They were just silent. She was silent. वो अपना तस्बीह पढ़ रही होती थी या मिसवार चबा रही होती थी, वो अपना सिगरेट पी रहे होते थे. Oh, switch whatever. अच्छा माँ जी फिर चलना. So I can't say he got it from his mother because that was the mother. The wife was a little bit of a demon in her own way, but I mean she would not have been him if it hadn't been her. I mean she was his rod at the back. ये मेरी बहुत अच्छी प्यारी this very dear friend who's now unfortunately long gone. She used to say दिल्ली में थी, कहीं थी, फैज सारे नजर आता है, फैज के पीछे एलिस किसी ने नजर नहीं आती. फैज ने फैज नहीं सी होना, एलिस ना होती. So so she was his. So I don't think he got it from her, and of course I was a mother, just barely. I mean just, and then he went off in exile and so on and so forth. So I think this I don't know where you got, but then don't forget, or maybe you don't know. Again, read the book Love and Revolution by Moneeza Hashmi. My grandfather married several times. ज़ाहिर है 4 से ज़्यादा तो नहीं की होंगी, God knows. But he came from Afghanistan, so he was given women. जो शादी शायद की कि नहीं की, I don't know. Again, read the book.
तो मेरी बेतहाशा पुपियाँ हैं जो नहीं हैं, जो हाफ पपीज हैं, you know. So there was Faz was surrounded by women. by his sisters and his. So I think that is It made a perhaps difference. It made a difference because I think he's very inclusive in his content. Thank you very much for your time, Mrs. Hashmi. You've given us your time. I think यहाँ पे भी आपने जितना giving का you've been a great inspiration to women like myself. Because they've been few and far between. I think in Pakistan who have इस propped other किताब people up. का I've written it to her. इसमें है, if you read it, she really takes more than half the credit. जान को मेरे पीछे Mrs. Hashmi, because a book like this takes a time. 5 साल इसको लगे because अब धोबी आ गया, फलाना आ गया, फलाना लिखती कोविड ने लिखवा ली एयरपोर्ट्स पे भी लिखा है. है, मगर ये है कि she was somebody who was constantly at my back, on my back. So I owe this book to you and to a couple of others. Thank you for giving us the letters. They're your private letters. Yes. Thank you for bringing it out into the public domain. And thank you again, Said Books and Atom Camp for putting this together. Please. Thank you.